preferable if we do it at the end of the talk altogether. Now we'll start off. Just give me a moment to share the screen again. Right. So we're talking about common medical emergencies. Geriatric emergencies is mostly because Samvedna's purview is the senior care. These are common emergencies that can happen at any age. What today's topic is about is some common disorders that most people live with or know someone who lives with it. And it's not to give you a very detailed understanding or information. It is simply to prepare you to not panic or have too much anxiety when faced with a situation like that, and what to do till first responders arrive. How can you help in the 15 to 20 minutes that it takes for people to come? What is the number to call for help? A lot of people are still calling 100, or they're calling the local ambulance. And right now, I know there's a difficulty in finding hospitals where the patients can be taken to. But apart from the COVID designated hospitals, the rest are still taking emergency patients. So the number now is 112. Please note it down. That is the common number for all emergencies, and you will be directed to the relevant party who can help, whether it's the emergency medical people or the police or the fire, whatever. Tenders, they will come on the same number. You don't need to call different numbers anymore. What are the topics we'll be covering in brief? What happens in a heart attack? That's the most common doubt people have, that if it happens at night and it's taking half an hour for people to come, whom do I call? What do I do till then? We'll talk about that. Diabetic emergencies, a lot of Indians live with diabetes and falls. Now, this is especially important in the senior citizens. What do we do? In case you fall, or how to prevent a fall is the purview of today's topic. And at the end, briefly, I would like to just initiate a conversation on some topics where there is some shame or stigma associated with the topic and people don't generally mention it to their caregivers or the doctor. Starting off, what is a heart attack? It could be two things. Either the blood is not reaching the heart muscles, or there is an arrhythmia, which is the electrical activity of the heart is going a little haywire, और वो धड़कन आपकी irregular हो गई है. In either case, it's called a heart attack, and the common method in which the body is getting or the brain is getting damaged is because oxygen is not reaching. Cardiac arrest is where the heart has stopped breathing, and myocardial infarction हमें जो बोलते हैं कि वो दिल का दौरा पड़ा है, is where the clot has reached the heart and the oxygen is not going to the heart itself, so it stops pumping and then oxygen is not going to the rest of the body. Now here it's very important, if you are around, as soon as you've called for help, what can you do in the 5 to 10 minutes, during which time is the crucial window. If you can help, nothing like it, because 10 मिनट के बाद जो ब्रेन को बिना ऑक्सीजन के डैमेज होता है वो irreversible हो जाता है. How to identify a heart attack? A loud cry, obviously. Classically हमने पिक्चर में देखा होगा कि वो दिल पे हाथ रख के या हाथ पकड़ के someone's choking, crying out in pain and then falling down. But it's not always necessary that you have to have those symptoms. There can be arm pain, there is चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थकान फील करना, sweating, पसीने आने लगते हैं, ठंडा फील करने लगते हैं, and palpitations, which is आपको अपनी धड़कन खुद सुनाई देने लगती है because your heart is trying to pump. In women now, we have to be careful that these common signs may not be there. It may often present just as a neck pain, a back pain, or simply a headache and a shortness of breath कि सांस चढ़ गई है. लोगों को लगता है कि कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, गैस बन रहा है, एसिडिटी का है, वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, they might feel better, and then later they may have a bigger heart attack. But in such cases, especially in elderly women, if you have those symptoms, nausea, vomiting है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, आपके फैमिली में कोई हार्ट डिजीज का हिस्ट्री है, then please, there's no harm in calling an emergency medical team and just having it looked at. Now, what do you have to do? Do not move the patient till qualified help arrives. लोगों को लगता है कि अगर कोई गिर गया है या साइड पे पड़ा है या टेढ़ा मेढ़ा गिर गया, you start moving them. Try not to have too much movement. You might dislodge the clot and it will go to the brain. So you might cause a stroke.
in something that you can actually help by restarting the heart and getting it pumping again. Most important, as I have said again and again, is oxygen. दिमाग को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, हार्ट को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है. What you can do is help the patient breathe if possible and start chest compressions. वो कैसे करते हैं will be, it's a little difficult, थोड़ा मुश्किल होगा ऑनलाइन समझाना. But I think most people have seen it in movies or seen videos, and you can find a video later also to learn it for yourself. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप खाली एयरवे खोलने की कोशिश करिए ताकि ऑक्सीजन जाए पेशेंट को. Now, this is important because 45% of people are actually saved because of bystander CPR. That is not a trained person, not a medical person. बगल में जो खड़ा हुआ इंसान है उसने देख लिया, CPR start कर दिया. 50% of these patients will have a better outcome than the ones who were not here. And if you start these compressions within the first 10 minutes, you will avoid brain death. Basically, if the person is on the floor, आपको खाली उनको अपने बैक पे लिटाना है and push the chin ताकि गला सीधा हो जाए. If the patient is in this position or lying on their side like that, ये थोड़ा airway compress हो जाती है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है. You just have to extend the chin so that the neck is straight and oxygen has a clear pathway to the person's lungs. Then आप अपना पंजा ऐसे लेके दूसरे पंजा उस पर फिट करेंगे, so it becomes like a hard compressing mechanism, and you have to push with the heel of your hand. Where do you place your hands? In between the patient's nipples. अंदाजे से आप उनके एकदम ये जो ब्रेस्ट बोन हम जिसे बोलते हैं, बीच में जो हड्डी होती है स्टर्नम, अप्रोक्सीमेटली जस्ट बिलो द नेकलाइन, ये जो हमारा यहाँ से हड्डी स्टार्ट होती है उसी को फॉलो करते हुए आप नीचे हड्डी पे जाएंगे और निपल्स के बीच में जो जगह आपको मिलेगी, राइट वेयर इट एंड्स, वेयर देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू, हड्डी खत्म हो गई है, वहां पे हार्ट होता है. आप वहां पे अपना पंजा रख के, हियर, दिस इज द मोशन. इफ यू कैन सी मी, दिस इज द मोशन, नॉट दिस, नॉट दिस, दिस, विद द हील. यू जस्ट स्टार्ट एंड यू हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ द पेशेंट. मतलब पेशेंट आपके साइड पे नहीं होगा, आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप अपने पेशेंट के चेस्ट के साइड पे नील करेंगे या बैठ जाएंगे एंड यू स्टार्ट द कंप्रेशंस. जॉ इज लिफ्टेड टू अवॉइड बेंडिंग ऑफ द एयरवे, एंड इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड, ओनली कंप्रेशन इज रिकमेंडेड. आपको कोई ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट अप्रोक्सीमेटली every 3 seconds you should have one compression. आप इस अंदाजे से करेंगे, आप जितनी तेज कर सकते हैं या जितनी स्लो कर सकते हैं, you start it. But make sure you've called for help. As soon as they arrive, they will take over and this will definitely help your patient. If it's an arrhythmia जिसमें धड़कन irregular हो गई है, प्रेशर की वजह से ब्लड फिर भी हार्ट से निकलेगा, maybe the beat will regularize. If it's a clot, again the same thing, the rest of the heart will get the blood and the oxygen, and this oxygenated blood will go to the brain. हमारा पर्पस ये सीखने का ये है कि हार्ट से जितना ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड हम कोशिश करते हैं ब्रेन में पहुंचाने की. Once the patient gets to the hospital, you give the details to the doctor, they will take over and this will help the patient. Moving on to diabetes. I'm sorry, someone unable to hear me? Yeah. Are the other people able to hear? Let's do a quick check on the audio. Just type in yes if you can hear. Other people? Yes. Okay. Is that fine? Looks like it is fine. तो जिनको नहीं सुनाई दे रहा है उनका एक बार ऑडियो चेक कर लें सर आप. Maybe the mute button is, or increase the volume on your laptop or something. Shall I continue? I think people are able to hear, so it's probably a connectivity issue. Yeah, continue please. Okay. And the recording of this will be also available in case something is not audible. Right. So now diabetes.
आपको होगा या आपके किसी जान पहचान वाले को तो डेफिनेटली होगा. Majority of Indians become diabetic in their middle or late to middle ages. It's a lifestyle disease. It's a endocrine disorder. You know about it. We're not going to go into the details of it. A diabetic emergency now is one of the most life-threatening disorders or life-threatening emergencies in which you need to get to a hospital really fast. But before that, again, in the 15 to 20 minutes it takes for the ambulance to come, take you, or start assessment in the ambulance, what can you do? दो टाइप का होता है. ज्यादातर डायबिटिक लोगों को खुद पता होगा, पेशेंट्स को या फिर उनके केयर गिवर्स को. आपकी जब भी बात हुई होगी डॉक्टर से, दे मस्ट हैव टोल्ड यू कि क्या होता है डायबिटीज एंड व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर. सो इट्स ऑफ टू टाइप्स. या तो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है या शुगर बहुत ज्यादा गिर गया है. इन इट कैन हैपन ड्यू टू मैनी कॉजेज. अगर कोई इंसुलिन ले रहा है या फिर कोई ऑलरेडी दवाइयों पे है और आप फास्टिंग करते हैं या आपका खाना टाइम पे नहीं मिलता है, तो शुगर कैन फॉल सडनली. Or you've not given the proper dose of insulin and you've started eating, and blood sugar rises. Both are dangerous, both can be life threatening, and both may leave some deficits behind. But hopefully that will not happen because you know what to do before that. Too much exercise, poor timing of medication, which is why we say routine and discipline in diabetes is very important. There are different symptoms of both the thing. Hyperglycemia में different symptoms आते हैं. Hypoglycemia में जहाँ sugar कम हो जाता है, different symptoms आते हैं. And depending on the sugar level, आप symptoms देखेंगे. Now, what are the symptoms you have to watch out for? Consciousness, मतलब कोई बहुत ज़्यादा drowsy हो रहा है या उसको नींद आने लगी है, उबकाई आने लगी है, थक रहे हैं. Sweating and shaking, ट्रेमर्स होते हैं, पसीना आने लगता है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान, अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आना, पेशेंट देमसेल्फ में कंप्लेन कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहा है, कंफ्यूजन हो जाना या फिर कंप्लीटली बेहोश हो जाना. नाउ दिस गोज इन ऑर्डर ऑफ द शुगर फॉलिंग. इट विल स्टार्ट विद पेलनेस, बहुत थके हुए लग रहे हैं, कोई या पसीना देख रहे हैं, फिर और गिरता है तो आप स्लीपी हो जाते हैं, थक जाते हैं, और ज्यादा गिर जाता है विदाउट एनी इंटरवेंशन. देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. व्हाट कैन यू डू? Measure the blood glucose. I'm assuming every diabetic patient or caregiver will have a glucometer at home. अगर है तो पहले आप मेजर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉल 112, गेट बैक टू द पेशेंट. अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल या तो इंसुलिन देना होगा या शुगर देना होगा. डेफिनेटली पानी देना होगा इन बोथ केसेस. सो यू स्टार्ट मेकिंग द पेशेंट ड्रिंक वाटर एंड नोट ऑल ऑफ दिस डाउन. इंसुलिन लास्ट कब दी थी पेशेंट को, शुगर कितना है जो आपने मेजर किया है, मील टाइम लास्ट कब था, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, बाथरूम गए थे नहीं गए थे, यूरिन आउटपुट हुआ था या नहीं हुआ था. If you are close to the patient, you can smell their breath. Now this is something people will might have noticed. जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, there's something called diabetic ketoacidosis. In that condition, एक फ्रूटी ओडर होता है ब्रेथ का, स्वीट सी स्मेल आती है पेशेंट के मुंह से या नाक से जो सांस वो ले रहे होते हैं. अगर आपके पास मशीन नहीं है मेजर करने वाली, पेशेंट बेहोश हो रहा है या थक रहा है, अगर ये स्मेल आ रही है, इट मीन्स शुगर इज वेरी हाई. Immediately you can give the lowest possible dose of insulin, note it down, and wait for help to come. It is 0.1 unit per kg of the insulin dose that you have to give. उतना ही देके आप रुक जाएंगे. इन केस बहुत कम है शुगर, आपको लग रहा है पेशेंट बेहोश हो गया है, उनको ट्रेमर्स आ रहे थे एंड देन दे फेल, यू नीड टू गिव शुगर. यू कैन गिव 5 ग्राम ग्लूकोज की टैबलेट्स. अगर घर पे पड़ी हैं तो वो 2 टैबलेट्स इमीडिएटली आप दे दीजिए. नहीं है तो घर में चीनी होती है, वो 2 चम्मच आप दे सकते हैं. यू कैन गिव फ्रूट जूस if the patient is capable of drinking, and you can give water or plain soda. You can always give up to 500 ml of water if the patient can drink. Nothing like it, वो भी आप note करेंगे and get to a hospital. Obviously, prevention is always better than cure. Strict glycemic control should be maintained for a diabetic patient, blood sugar charting, and a nutritional plan.
Moving on to falls. It's a geriatric giant in geriatric care. And why are falls important? We have 7.5% of our population is over the age of 65, and this incidence is only increasing, the age gap. There is a 14% incidence of falls at home. मतलब 14% लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सॉरी, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग एट होम. और ये इसलिए रिस्की होता है बिकॉज सीनियर सिटीजन्स में ऑलरेडी बोन्स आर अ लिटिल वीकर, कैल्शियम इज अ लिटिल लोअर, repair and recovery of the body is slower. Fall can result in a fracture which may take much longer to heal and will leave you with pain or scars, or you might need a surgery which is better avoided. 51% of people have fallen in the past 6 months. आप लोग आपस में भी सोच सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, किसी और के बारे में सोच सकते हैं, लड़खड़ाए हैं, गिरे हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया है, and you felt like you're about to fall but control yourself. These are all risk factors which may lead to a fall, and we would like to prevent it. What are the risk factors for a fall? Who should be more careful? If you've already fallen once, मल्टीपल मेडिकेशंस. कई मेडिकेशंस होती हैं जो बैलेंस को इम्पेयर करती हैं, या फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन, मीनिंग आपका बीपी जब आप खड़े होते हैं तो थोड़ा सा फॉल करता है, जब थोड़ा सा चक्कर आता है, यू मे फॉल. एज ओवर 80, arthritis, any bone conditions, any impairment in balance already which is there, and a visual disturbance obviously. अंधेरे में कम दिखाई देता है, कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है. Sometimes a cataract is detected because the patient has fallen. And up to half of the falling occurs in and around the house. Women will have more fractures than men. Men will fall more. The risk of repeated falling is more in men because they don't usually tell the caregivers कि हम गिर गए थे या लड़खड़ा रहे थे. And most important thing which can happen in a fall is head injury. We want to prevent that. 25% of all falls result in a head damage, which we don't want to have in a senior citizen. Let's quickly go over a home safety checklist. आप इस चीज को prevent कैसे कर सकते हैं? These are very common sense, common methods which you can easily do at the house. In the living spaces, जो common areas हैं घर के, rugs मत रखिए जिसपे slip हो सकते हैं, या फिर उसको fix कर दीजिए carpet को. Reduce clutter naturally. Wires and cords fix होने चाहिए, हिलते मिलते नहीं चाहिए, या फिर floor पे नहीं चाहिए. Remove low furniture because it's difficult to get into them and to get out of them. Fix the lighting, adequate illumination. Ensure you can reach the phone from the floor. अगर आप अकेले रहते हैं या फिर आपका help थोड़ा दूसरे कमरे में है या कहीं और है, and you don't have an intercom in your house, or at least you have a mobile, then you should be able to reach that. अपने आसपास लेके रहिए फोन को. And अगर आप ऊपर नीचे रहते हैं तो hand rails for staircases to prevent slipping and have something to grab onto. In the bathroom, if you're not feeling very comfortable of being left alone, ideally हम मना करते हैं कि दरवाजा लॉक मत करिए अगर ऑलरेडी कोई बैलेंस प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. आई अंडरस्टैंड लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ. सो हैव ग्रैब बार्स इन द bathroom as well, next to the toilet seat, in the shower, next to the bathing area. Have bars that you can grab, a plastic mat in the shower or tub to avoid slipping, and a raised toilet seats. ये पैडेड सीटिंग आती है लगभग 2.5 या 3 इंच की, वो आप लगा के अपने टॉयलेट पे फिक्स कर सकते हैं. इट कैन बी रेज लाइक द कवर एंड देन पुट बैक फॉर हुएवर नीड्स टू यूज इट. थोड़ा हायर सीट होगा तो उठने में दिक्कत कम होगी. नाउ प्रिवेंशन अगेन, vitamin D and calcium supplementation depending on your doctor's recommendation. Otherwise also अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपको हर दूसरे 3 महीने के गैप पे for about a month, the 4 sachets of vitamin D, a month of calcium supplementation with the vitamin D capsules खुद कर लेना चाहिए. DEXA scan कई लोगों ने सुना होगा या कराया होगा, which will tell you the risk and the condition of your bones. Balance and muscle strengthening exercises should be started. We have yoga, we have tai chi. If you enjoy dancing, please dance every day for a while.
Now, what to do if you fall? प्रैक्टिस फॉलिंग डजंट मीन कि आप जानबूझ के गिर जाएं और चोट लग जाए और फिर बोले कि तो संवेदना में बताया गया था हमें गिर जाओ. यू सी जहां पे आपका लाइकली है कि आप इस कमरे में गिर सकते हैं, ड्राइंग रूम में नीचे बैठ के देखिए फोन रीच कर सकते हैं, आप आवाज लगा रहे हैं तो दूसरे कमरे में लोगों को सुनाई पड़ता है कि नहीं, या अपने बेडरूम में गिरते हैं, सो कैन यू क्रॉल टू द नियरेस्ट चेयर या फोन, एंड हाउ टू गेट अप व्हेन यू फॉल, एंड टू कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली. लाइक आवाज लगाएंगे तो दूसरे कमरे से कोई आएगा, या फिर फोन करेंगे तो 112 पर फोन करके आप किसी को बुलाएंगे इफ यू आर इन अ लॉट ऑफ पेन. With bent elbows and knees, the point is not to land on bony prominences, क्योंकि वहां पे फ्रैक्चर का चांस ज्यादा होगा. The idea is to fall on muscular or fatty areas, like the side of your body or the side of or the thighs. In case of a sprain, pain, support the limb and get to the hospital. In case of soreness, gently get up and lie down with limb elevation. And in case of swelling, you definitely need a further checkup. If you have no swelling, no restriction, no soreness, आप गिरे उठ गए चलने लगे, you are very lucky, but please still avoid it for the next time. आप, as I was saying, when you practice falling, आप roll करके अपने side पे अगर गिरते हैं, then you have to roll back on your back, get on the side which is not injured, support yourself with the hands and the knees, and get up. Stand up straight, go to the nearest support, and lie down if you're able to do that. If not, please crawl to the nearest bed or chair. उसमें फिर आप बैठ जाइए और फिर let the person whoever is with you come and check कि डैमेज कितना हुआ है नहीं हुआ है, दर्द कितना है. Now there is an exercise you can do after the talk is over. Definitely please don't do it alone. Make sure someone is there with you. आपके पास जो भी है उनके बगल में खड़े हो जाइए और आप एक फुट पे खड़े होंगे, जैसे एक टांग पे खड़ा होना. If you're able to do it for more than 10 seconds, the risk is less of you falling, and accordingly there's a gradient. Some people are able to do it for 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds. You have to practice every day and get yourself to 30 seconds, because if you are losing balance and you're on one leg and able to balance, you will not fall. Moving on, these are some common but taboo conditions which people don't usually mention to the caregiver or don't like to talk about. Bladder control issues, malnutrition, and sex at 60. ब्लैडर कंट्रोल इज, हम ब्लैडर कंट्रोल की कब बात करते हैं? जब थोड़ा बेड वेटिंग होता है या फिर आपका कंट्रोल अपने ब्लैडर पे कम हो रहा होता है. विद एज द मसल्स वीकन अ लिटिल बिट एनीवे, सो देयर इज कॉफिंग के साथ थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है. दिस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट. एंड बिकॉज इट्स एम्बैरेसिंग टू वेट योरसेल्फ इन पब्लिक और एट होम, या बिस्तर की चादर आप खुद बदल लेते हैं, किसी को बताते नहीं है. People don't like to talk about it, but you are not alone. Definitely, there are like 5 crore Indians suffering from bladder control issues at any given point of time. 1 in 10 over 65 people have a problem of bladder issues at any given point of time. And most of these cases can be cured or controlled with treatment, but only if you tell your doctor or your caregiver or your primary care physician. And some common problems which cause a bladder control issues, again, men में prostate होता है, men and women में diabetes होता है, neurological conditions where the nerves are becoming desensitized or the musculature is becoming weak. Women who have weak muscles of the pelvis, again, bladder control becomes weak. There are different exercises to be done for this, which we can get into later. Women are twice more likely to have a bladder control issue than men, but also women's conditions can be addressed more easily and more frequently than in men. Because अगर prostate की वजह से है तो कुछ दिन medication से control होता है. After that you might require surgery. Malnutrition. ये थोड़ा अटपटा टॉपिक है कि हम घर में रहते हैं, खाना खाते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, malnutrition कैसे हो सकता है? वेट में कोई चेंज नहीं आया है, I feel energized, so why are you saying malnutrition? Malnutrition doesn't mean आपके वजन में कमी है या फिर खाने में कमी है. It means there is a
deficiency or decrease in essential vitamins and minerals. So it can happen to many reasons. आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, मतलब आपका बैलेंस डाइट नहीं हो पा रहा है, आप जो पहले खाते थे वही खा रहे हैं, बट नाउ योर बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑफ द essential vitamins and nutrients जो खुद से स्टोर नहीं कर पा रही है बॉडी. Malnutrition is not a normal part of aging. I hear a lot of people say कि नहीं उम्र हो गई है इसलिए वजन घट गया है या फिर फैट कंटेंट कम हो गया है, and you're seeing multiple electrolyte abnormalities. This is not normal aging. We need to cut the bad fats from the diet, the bad salt, oily fried food, increase the frequency of meals, fruits, dry fruits, vegetables, eating with other people in your family. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकेले खाने का मन भी नहीं करता है और लोग कम खाते हैं या फिर खाना पूरा खत्म नहीं करते हैं. बट व्हेन यू ईट टुगेदर एटलीस्ट यू कैन कीप वॉच ऑन ईच अदर्स ईटिंग हैबिट्स, मील फ्रीक्वेंसीज, और खाना खत्म हो रहा है कि नहीं, या फिर खाने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है निकलने में, swallowing में, पानी कम जा रहा है, जंक फूड ज्यादा जा रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sex at 60. It can decrease due to female or male causes or both. Relationship dynamics in India, there's privacy and the living space structure कि आपको privacy नहीं मिलती है as soon as you've had kids, your public property in the house. 72 people are sexually active under 60, but only 57 over 60. Others become completely abstinent at some point in their lives. If it's by choice, good for you. If it's not, then generally there is something we can do about it. There is a decrease in libido for both male and female, but the causes may be slightly different. Like for male, again, there will be prostate issues, sensory disturbances due to diabetes, sensory disturbances in females also, but in females, you have dryness of the vagina, which can also cause painful consummation. Very briefly, delirium. ये बेसिकली डिसोरिएंटेशन होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है. अगर आपका पहले हेल्दी अलर्ट पेशेंट था या आपका फैमिली मेंबर थे, वो बहुत अलर्ट थे, रेगुलरली बातें करते थे, अचानक विदाउट एनी कॉज कंफ्यूज हो रहे हैं, नींद ज्यादा आ रही है, बोल नहीं ठीक से रहे हैं या फिर अकेले में बड़बड़ा रहे हैं, दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी. प्लीज कॉल फॉर हेल्प. आई एम डन एट माई एंड. अर्चना, any questions, comments? I will stop here. Okay. You can. Thanks, Dr. Kisle. So I would request all of you to please type in your questions in the chat window or raise your hand, and then I'll call you out. Yes. So, are there any questions? Anybody has anything specifically? I just see one hand raised. Is that by Mr. Samaram? Is that you have a question? I see your message. Could the practice falling? I thought it might be a bit confusing online. Practice falling, sir, आपको गिरना नहीं है. आपको अपने अलग अलग कमरों में जाना है और जमीन पे अगर आप बैठ के ये देखना है कि अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं तो घर में किसी को सुनाई दे रहा है या नहीं, एंड वेदर फ्रॉम दैट प्लेस द फोन इज एक्सेसिबल और नॉट. कुछ लोगों के घर में फोन एक हाइट पे लगा होता है एंड दे आर नॉट एबल टू रीच इट. इवन इफ यू आर एबल टू क्रॉल, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट. या आपके रास्ते में इतने वायर्स और कॉर्ड्स होते हैं या छोटी टेबल्स होती हैं, रग्स होते हैं जिसपे स्लिप कर सकते हैं या फिर कोने होते हैं, उनसे और चोट लगती है. So the idea is to have a very decluttered space in your house, especially if you're living alone or two elderly people are living together. Yes. I'm sorry to see Yeah. that comment. So he's saying you may not practice falling, but practice reaching help if in a fallen position. Yes. और अगर जिनको अगर बहुत वर्टिको होता है या चक्कर आते हैं, then the idea is to fall on the muscled portions of your body, not bony prominences. शोल्डर पे गिरेंगे या हिप पे करेंगे तो फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा होगा. अगर आप अपने थाइस पे गिरेंगे या फिर ऑन योर
बम, लाइक कोई सीधे गिर रहा है तो आप अपने बम पे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, बिकॉज यू आर ऑन द मसल्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी विच विल कुशन द फॉल. दैट्स द आइडिया. Yeah. And if you roll your body in together like a ball, the risk of injury to the bones will be less. That is the idea. Yeah. Someone was saying about So there's another question on tendon damage. Do we go to an orthopedician or a physiotherapist if there is a fall? if you're sure it's a tendon damage, then orthopedician. Mr. Seth is asking what are the major causes of diabetes? So depending on when it starts, like youngsters में start होता है तो वो genetic होता है, called type 1 diabetes, where you are insulin dependent from the start. Middle age में होता है, then there is a genetic predisposition, आपके family में किसी को रहा हुआ होगा, and then lifestyle will affect. Healthy eating नहीं है, exercise नहीं है, weight बहुत ज़्यादा gain कर रहे हैं, that can result in diabetes. And in elderly, pancreatic insufficiency होती है. So there are two main causes. One is the insulin resistance. Like in obese patients, इंसुलिन तो होता है बॉडी में, पैंक्रियास बना रहा होता है, बट आपके रिसेप्टर्स उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं. एंड देयर इज पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, वेयर आपका पैंक्रियास जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेक्स लेस एंड लेस इंसुलिन, विच इज व्हाई यू नीड इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड टू कंट्रोल द शुगर लेवल्स. और जो डायबिटीज के मेडिकेशन होते हैं जिन्हें हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स बोलते हैं. Okay. Any other questions specific to how to respond in geriatric emergencies? Does weather have an impact on health conditions of senior citizens? Yes, depending on the illness. Yes, sir. 112 is an all India PAN problem helpline. It's the common thing now, common number now. Like arthritis, कुछ लोगों को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है because your bones are, your joints are swelling up या फिर paining a lot. So in that way, yes, infectious diseases, bone diseases में weather का affect होता है. But lifestyle disorders, endocrine disorders, उसमें weather का role नहीं होता है. Like if you're asking me, diabetes में sugar fluctuation with weather has not been noticed. Or BP, hypertension में. So you mentioned you had mentioned a question point about malnutrition. So specifically now, there is a lot of senior citizens are at home alone and probably do not have domestic help also to cook for them. So what is your advice to seniors, and how do they take care of their nutrition in this time of the COVID crisis? If the supply lines are intact, definitely increase the consumption of fruit and vegetables. ड्राई फ्रूट्स अगर घर में पड़े हैं तो ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट का पार्ट बना लें. लाइक स्नैक्स में वॉलनट्स, आमंड्स will take care of some of the essential nutrients. And supplements, a lot of people will have supplements lying at the home anyway. तो अगर आपके 3 महीने हो गए आपने कोई supplements नहीं लिए हैं, please start. Vitamins, multivitamins, the B complex vitamins and calcium and vitamin D for sure. आप एक महीने का कोर्स खुद करके रुक सकते हैं. And then whenever possible, you can get a blood test done for these things to know where you stand nutritionally. Also, I think protein sources are there in simple things like milk and curd also, and paneer, which you can even eat. हाँ, पनीर, मीट अगर नहीं मिल रहा है तो दाल. Dal. That's a good source. Paneer you can even eat raw, right? You can just make a nice salad out of it and get the proteins for. Yes, salad with cheese and paneer and walnuts and dry fruits. It'll be tasty also and it's beneficial also. ऑयल आप चूज कर सकते हैं अगर ऑलरेडी घर में मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल आता है. दीज ऑयल्स आर बेटर. कोकोनट ऑयल. Okay. Then there's a question from somebody who is asking, how long can a senior keep taking Viagra regularly? Sir, depends on the frequency. अगर weekly thrice ले रहे हैं आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, then you can continue without any problems. Especially if you had a heart checkup done earlier. अगर आपके blood vasculature में या cardio में कोई problem नहीं है, तो आप regularly उसको ले सकते हैं. But if you're taking it on a daily basis, then it's better to give a gap of a few days
डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस. अगर आपने खुद स्टार्ट किया था, आप डेली ले रहे हो 7-8 दिन, देन गिव योरसेल्फ अ गैप ऑफ 2 days आफ्टर एवरी वीक एंड रीस्टार्ट. But ideally, I would highly recommend a cardio workout before starting anything that is a vasodilator. Okay, thanks. Joint pains in elderly. What are the causes and prevention? Briefly touch upon it because I think it's a topic in itself, so we can't. Yeah, it is quite a detailed discussion. Like falls by itself is a detailed discussion. So joint pain, swelling, soreness, arthritis से भी होती है. There are systemic disorders like there is SLE if you've heard of it. Systemic lupus हम जिसको बोलते हैं erythematous lupus disease. And in some chronic conditions, like some people with chronic kidney problem or a chronic liver problem will report कि हमें joint pains बहुत ज़्यादा होते हैं. या आपको spondylitis and cervical vertebrae में vertebral infections जो होता है या deterioration start हो जाती है, आपके vertebrae के बीच में जो pad होता है वो compress होने लगता है और slip disc हो जाती है. That will all cause joint pains. And it also depends on where you're having the joint pains. Like the small bones and joints of the fingers and hands is usually rheumatoid arthritis. There are different types of arthritis also. Bigger bones could be because of endocrine disorder, metabolic disorder, or some other kind of systemic disorder that you're going in for. Okay. Any other questions? So, Dr. Kisle, if you can just briefly, you talked about delirium, and you can briefly talk about the electrolyte imbalances and what are the, what elderly can do to take precaution for that, and how do you identify those signs, if you don't mind? Right. So delirium again is a big topic in itself, and it's a symptom. जैसे it's not a disease. Delirium diagnosis नहीं होता है. Delirium is a part of a disease. It's a symptom. Like confusion. Hum delirium is basically fluctuating consciousness with disorientation. You have two things. अगर ये चीज हो रही होती है तो उसे हम delirium बोलते हैं. Somebody who's well oriented, concentrating well, आपके relevant responses आते हैं, सवालों के जवाब अच्छे से आ रहे हैं. If that is your patient, and one fine day they are late to get up, उठ नहीं पा रहे हैं या फिर ड्राउजी हो रहे हैं या बार बार खिड़की के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दरवाजा है या कोई आया है, मुझे कोई दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज सुबह या शाम है, आज दिन कौन सा है. Right now everyone's confused about what day it is, but if you don't know whether it's day or night, then your patient is going in for a level of confusion which is called delirium. That is a medical emergency because उसके बहुत सारे causes होते हैं और वो घर पे हम नहीं pick up कर सकते हैं या treat कर सकते हैं, which is why you need to call an ambulance and get to a hospital. One of the major causes is an electrolyte imbalance. As you said, again इसको हम घर पे measure नहीं कर सकते हैं, इसका separate test होता है, blood test होता है, serum electrolyte करके. Salt ऊपर नीचे जाना, sodium, potassium. Most commonly it's sodium and potassium which is out of balance, which is causing a delirium due to electrolyte disturbance. And there are many other causes, hypothyroidism, hyperthyroidism, dementia के patients में early onset में delirium कभी-कभी pick up करते हैं हम लोग, या chronic conditions में someone who has a chronic lung disorder, COPD, hypoxia हो रहा है brain में, या फिर oxygen ठीक से नहीं पहुंच पा रही है in case of a cardiac arrhythmia, that can also cause delirium. Okay. So I think that answers SK's question about cutting salt, but isn't low sodium a common problem in seniors? So I think somebody has low sodium. I'm sorry, I didn't get the question. Could you just read it out again? The question is that you are mentioning, so he's asking, you mentioned cutting down on salt, but isn't low sodium a common problem in seniors? It is, which is why you need to have a serum electrolyte test done before modifying your diet permanently. Cutting salt is added salt. Cutting salt I mentioned in malnutrition, sir, is added salt. WHO की जो recommended guidelines है ना, 5-6 से like 3 or 4 table small teaspoons of salt per day. तो आपके दाल में अगर already नमक है और ऊपर से आप 1 चम्मच और घी और नमक का डाल रहे हैं, you have to avoid that.
because that may cause a salt imbalance. If your kidneys are not functioning optimally, वो salt body से बाहर नहीं निकलेगा, and you will go in for a salt imbalance. And so cutting salts means the processed salts. चिप्स में जो सॉल्ट होता है, फ्राइड खाने में जो सॉल्ट होता है, या जो स्नैक्स हमारे फ्राइड वाले आते हैं, द पैक्ड ones, they have excess of salt. That is what I want you to cut from your diet, not the regular salt that you're having. इन सब्जी नहीं, जो आप रेगुलर खाते हो वो प्लीज खाइए, उसको मत हटाइए. उस पे अगर आपको लग रहा है, इफ योर फैमिली मेंबर्स नोटिस और यू नोटिस कि जो आप रेगुलर खाते थे उसमें आपको 2 चम्मच और डालना पड़ रहा है टू गेट दैट टेस्ट, देन समथिंग इज ऑफ. सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबकी आदत भी अलग होती है. Any change from routine is where the problem comes with senior citizens. There's a question on something on acidosis. I'm sorry, could you read the question again? I can't see the questions here. Why is that? Oh, actually, this has come to me privately. So Tell this me. is a comment on something on acidosis. There are different types of acidosis, so you'll have to be a little more specific. There's respiratory acidosis, there is metabolic acidosis. Basically, body में hydrogen जो ion होता है वो बढ़ गया है. So you're going in for and bicarbonate आपकी body का गिर रहा है. So that is acidosis. It could be because of breathing में difficulty है, या body के metabolism में difficulty है, lung problem, kidney problem. It can all cause an acidosis. And are there any ways to prevent it, or I think? No, this is more of a specific topic related question. Like if you're asking me about respiratory acidosis, then what is the background? Is it because of a COPD? Is it because of an hyperventilation syndrome? Probably a COPD case. Yeah. Mr. Seth is asking, so I know he's It's a COPD, this thing. right. Okay, अगर आपको है और आपको ऑलरेडी एक बार हो चुका है, then you know there are breathing exercises. आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए होंगे to regulate your breathing. कभी कभी सांस बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और shallow हो जाती है, which means the oxygenation is not taking properly and the CO2 is not able to leave the body properly. तो आपका acidification की तरफ blood जा रहा है rather than being normal pH. To prevent it is to practice breathing exercises at home. मतलब घर पे आप जितना कर सकते हैं वो ये है. If you're already on oxygen support, then regulating the time that you are on that oxygen. Okay. Thank you, Dr. Kisle, for that. Are there any other questions? Okay, so if we don't have any other questions, then I'd like to thank you all for coming in today, and hopefully there's something to take away from this, and you would be able to share the information in your families as well as in your communities with senior citizens. And the next topic Dr. Kisle would be covering in the next week, and we'll get back to you on the date for that, is around dependence on substance and alcohol during the times of COVID, and how to take care of that. If there are any other topics that you would like us to cover as a part of these webinar series, please do type in the chat window, or you can send us a email on contact@samvednacare.com, and we will surely try to see how we can incorporate this. Thank you so much. Excellent audience and excellent questions. आप specific queries भी भेज सकते हैं अर्चना मैम को, and we'll try to get back to you. Yeah. So thank you all. Thank you so much for joining in today, and we look forward to seeing you again on the other side. And be safe, enjoy your time, and relax. Thank you.